Now viruses. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? We have studied animal cells, we have studied plant cells, we have studied bacterial cells. Now viruses. When we were doing the classification of living organisms, हमने 5 kingdom classification की. Prokaryotes, then we talked about protoctista, fungi, animal, and plant. Never in that classification did we talk about viruses. And why did we not talk about viruses? Because viruses are basically considered acellular. Now, what do I mean by viruses are considered acellular? Whenever this word A appears, it means कि हमारे पास वो चीज प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, किसी चीज की कमी, किसी चीज की एब्सेंस ए से हम इंग्लिश में या फिर हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में यूज कर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, asexual reproduction means absence of sexual reproduction. Similarly, acellular means absence of cellular life or absence of cellular organelles. Now, what do I mean by this? When we were studying cell theory और हम बात कर रहे थे कि सेल है क्या, किस चीज से सेल कंपोज हुआ है, so we said that all cells should have these three things to be considered or to be classified as a cell. And what are those? A cell is made up of cell membrane. A cell is made up of, a cell is made up of genetic material. क्योंकि हमारे पास why did I not write nucleus? I did not write nucleus because हमारे पास प्रोकैरियोट्स में genetic material जरूर होता है but nucleus नहीं होता. So there has to be genetic material either in the form of DNA or in the form of RNA. And हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास तो तीसरी चीज होनी चाहिए, वो हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म. If these three things are present, and all of these three things should be present for something to be classified as a cell. If these three things are present, we would classify that thing as a cell. But when we talk about viruses, viruses में हमारे पास क्या क्या present होता है? Now, viruses basically are composed of, every virus would possess two things mandatory. Its genetic information. Now, that genetic information would either be a DNA or an RNA. It could only have one. It can either have a DNA or it can either have an RNA. ऐसा नहीं हो सकता जैसे हमने यूकेरियोटिक सेल्स के लिए पढ़ा कि उनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस एंड आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. In viruses, viruses would have genetic information, and that genetic information would either be a DNA strand or an RNA strand. And the second most important thing, or the second thing which a virus is composed of, is a protein code. And that protein code is called capsid. And just तरह हमारे पास nucleus was protecting or nucleus was surrounding the genetic material, in viruses, this protein code, this capsid is surrounding, is protecting this genetic material, चाहे वो DNA हो या RNA हो. Now these two things, the genome of a virus and the protein code, these two things make up the structure of virus. तो वायरस के पास ये दो चीजें लाजमी होती है, उसका जीनोम लाजमी होता है एंड इट्स प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बुलाते हैं. Some viruses, not all, but some viruses also possess a third structure which is called an envelope. Now, some have it, not all have it. All the viruses have these two things. All viruses possess a genome.
a genome, and a protein code. So that is compulsory. A virus is made up of two things, genetic information and its protein code. But some viruses also possess an envelope, यानी कि हमारे पास, let me draw a structure of a virus for you. So, ये मेरे पास उसका genetic information है. That genetic information is surrounded by a protein code, and this protein code is serving as a protection, as a wrapping of this genetic information. Now, this is what a structure of a virus is. This is a general structure of a virus is for you guys. Now, some viruses would have an additional layer around it. They would have an additional coat. And this additional coat is basically called an envelope. Now, this envelope is present in some viruses and it is not present in some viruses. But the genetic information and the protein code are definitely present in all the viruses. Now, the question arises, viruses are acellular, like they do not possess the cellular things which should be present. And by that, I mean that a virus, does it have a cell membrane? No. A virus does not have a cell membrane. Does virus possess a genetic material? Yes. Virus does possess a genetic material. Now does a virus have a protoplasm? No, a virus does not have a protoplasm. Why? It does not have cytoplasm. It does not have any cellular organelles. So this is also present. So the only thing which virus has is a genetic material. And for something to be classified as a cell, all these three things should be present. But because only one of the three things is present inside a virus, we classify viruses as acellular particles or acellular species. Moreover, we also do not consider viruses as living organisms or living species. And why is it so? It is because हमारे पास viruses, as long as they are in the environment, as long as they do not affect or infect a host, they are inactive. And why are they inactive? This is a general structure of a virus for you, or this is a diagram of a virus. Now, this virus has genetic information inside its structure, and then it has a protein code. And outside the protein code, it has another protective covering, which is an envelope. Now, does this virus possess ribosomes? No, it does not possess ribosomes. Does this virus possess mitochondria? It does not possess mitochondria. Now, if a virus is not possessing a mitochondria, if it is not possessing ribosomes, it cannot produce its protein machinery, which means it cannot produce enzymes. Why? Because enzymes are what? Enzymes are proteins, और proteins हमारे पास हमारा सेल कैसे बना रहा होता है? Protein synthesis के through. And for that, we need genetic information and we also need what? We need ribosomes. Now, this virus does not have ribosomes. It cannot make its proteins, it cannot make its vital enzymes, which means कि इसका metabolism नहीं हो सकता. इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसकी कोई अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है. Subsequently, our viruses cannot reproduce in on its own. It needs to hijack, it needs to get into a host cell to replicate itself. It needs to overcome or it needs to hijack the metabolic activity, the protein machinery of the host cell, and only then it can undergo metabolism or metabolic processes. So, because a virus outside of the host cell on its own in seclusion is inactive, does not undergo any vital life processes, cannot carry any vital life processes. Why? Because it is not generating ATP. Why? Because उसके पास ना enzymes हैं जो कि respiration कर सके, उसके पास ना mitochondria है जो respiration करवा सके. So because it is not, it cannot have its protein factory, it does not have its respiration factory, it cannot live
as a living organism or as a living species outside of a host cell. A virus is completely dependent on a host cell for its metabolism, for its activity, for its life. So, outside of a host cell, a virus is inactive. It gets activated inside a host cell. Is it clear so far? Any questions in this regard? Now, we said that a virus can either possess DNA or RNA. किसी भी वायरस में दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं हो सकती. There has to be a DNA or there has to be an RNA. Now DNA और RNA की भी types होती हैं. We can have single stranded DNA, we can have double stranded DNA, we can have single stranded RNA and we can have double stranded RNA. इन 4 possibilities of genome में से कोई एक हर वायरस के पास होगी. Now, as I just talked about why viruses are considered as non-living. Now, viruses do not have their own cytoplasm, they do not have ribosomes, they do not have their own metabolism. So, outside of host cell, they are inactive particles which do not use energy. They only become active when they come in contact with the host cell. Now, what happens is, how is a virus surviving? Let's understand. So, this is basically my virus. Acha, before we talk about how it affects or how it hijacks the machinery of a virus or of a host cell, let's discuss कि हमारे पास जो ये 2-3 features हैं जो कि एक virus के होते हैं, what are their roles, what are they serving? So obviously, the genetic information, the genetic information or the genome जो कि आपके पास या तो RNA होगा या फिर आपके पास DNA होगा, that is basically it contains the genetic information. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वायरस के पास राइबोसोम्स नहीं है जो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके प्रोटीन्स बना सके. यानी इस जेनेटिक कोड का, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की मशीनरी वायरस के पास नहीं है. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कैप्सिड? कैप्सिड हमारे पास क्या है? कैप्सिड इज द प्रोटीन कोड. Now, before we talk about the function or the role of capsid, let's understand कि capsid बना किससे. So, if you could notice, मैंने बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स ड्रॉ कर करके पूरा प्रोटीन कोड बनाया. So, basically हमारे पास जो ये एक यूनिट है वो एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन का नाम है कैप्सोमेयर. So, capsid is a protein code which is made up of units, protein units. It is made up of protein subunits named capsomere. So our protein coat is made up of a protein called capsomere. And what is its function or what is its role? It is basically, इसका जो first role है, that is protection of the genetic material. That is its first role. And the second role is that this protein coat helps the virus in attachment with the host cell. So it helps in attachment. So host cell के साथ जो हमारी attachment हो रही होती है, it is due to the presence of this protein coat, उसका nature. हमारे पास जो ये envelope होता है, जो ये extra additional envelope होता है, ये कहाँ से आ रहा है? तो basically obviously virus जाकर infect करता है अपने होस्ट सेल को. तो जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो कभी कभार जो होस्ट सेल की अपनी सेल मेम्ब्रेन है, जो होस्ट सेल की अपनी बाउंड्री है, जो अब होस्ट सेल की अपनी मेम्ब्रेनस कवरिंग है, वो कभी कभार जो ये वायरस है वो उस पर रैप अराउंड हो जाती है. वो सो बेसिकली दिस envelope is being derived from the cell membrane of the host cell. तो जब वो अपने होस्ट सेल को लीव कर देता है वायरस सारी तबाहियां वबाहियां मचा के, और वो जब लीव कर रहा होता है होस्ट सेल को, तो जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है वो रैप अराउंड हो जाती है इस वायरस के और वो इसका एनवेलोप बना लेती है. सो दिस इज बेसिकली, ऑब्वियसली अगर ये सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है किसी होस्ट सेल की, तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है.
So this envelope is made up of a phospholipid membrane. Now, those viruses which have the envelope are called enveloped virus, and those viruses which do not have the envelope, they are called your non-enveloped or naked viruses. एनवेलप्ड वायरस में हमारे पास एग्जांपल होती है एचआईवी की, एंड नॉन एनवेलप्ड में आई थिंक पोलियो वायरस या फिर राइनो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन एनवेलप्ड नेकेड वायरस. सो एवरीथिंग क्लियर सो फार? अच्छा जी, हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज दिस वायरस अफेक्ट और एक्ट एज अ पैरासाइट इन अ होस्ट सेल. तो जब कल बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, सो वी सेड दैट हमारे पास those bacteria which have a slimy capsule around them, those bacteria have the disease causing ability. सिर्फ वो bacteria जिनके around एक slimy capsule होता है, वो pathogenic या virulent या disease causing होता है. और बाकी बैक्टीरिया जिनके पास वो कैप्सूल नहीं होता, वो वायरुलेंट या पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग नहीं होते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वायरसेस, all the viruses are parasitic in nature. And why is it so? It is because हमारे पास viruses need to hijack the host cell. They need to take over the host cell's own protein machinery. They would stop the host cell from making its own proteins, and instead they would force the host cell to produce viral proteins. And I would explain that to you in just a minute. So basically, this is your यूकेरियोटिक. यूकेरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, बिकॉज ओनली यस्टरडे वी स्टडीड कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस बुलाते हैं. सो लेट मी ड्रॉ अ न्यूक्लियस. मैं यूकेरियोटिक सेल बेसिकली ड्रॉ कर रही हूँ. ये मेरे पास इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ऑब्वियसली इसके अंदर इसका सारा क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल है. एंड लेट मी ड्रॉ द राइबोसोम्स. तो ये मेरे पास क्या है जी, this is my ribosomes of host cell, and this is the nucleus of host cell. अब क्या होगा? अब ये होगा कि मेरे पास जो मेरा वायरस है, ये आएगा और ये अटैक कर देगा किसको, मेरे होस्ट सेल को. ये इससे जाकर अटैच हो जाएगा. सॉरी, ये कंप्लीटली कॉपी नहीं हो पाया है. सो बेसिकली माय वायरस वुड कम एंड इट वुड अटैक टू दिस होस्ट सेल. ये कोई भी यूकेरियोटिक सेल है मेरा. एंड व्हाट हैपेंस इज कि वायरस अपने आप को जब अटैच करेगा इससे, तो वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा. और जब वो एंटर हो जाएगा, तो जो ये प्रोटीन कोड है, ये प्रोटीन कोड अंदर जाकर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा. ये डिसइंटीग्रेट कर गया प्रोटीन कोड, यानी ब्रेक ओपन कर जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा. और जो हमारे पास ये था वायरस का, जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, वो अलग से अब आ गया है, किसमें प्रेजेंट हो गया है, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ इट इज अ डीएनए वायरस, अगर तो ये मेरे पास डीएनए वायरस है, तो ये डीएनए वायरस पता है क्या करेगा, ये जाएगा, ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा. और ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे करवाएगा? हमारे पास न्यूक्लियस में डीएनए है, वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होगी, डीएनए पॉलीमरेज. We'll study about this enzyme in great detail when we're doing chapter 6. But अभी एक enzyme है DNA polymerase. DNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में काम आती है in producing messenger RNA. तो जो होस्ट सेल की अपनी एंजाइम है, क्योंकि वायरस के पास तो कोई एंजाइम नहीं, वायरस के पास एक प्रोटीन कोड है, एक जीनोम है, और थोड़ा सा इसके पास एनवेलप हो सकता है, नहीं हो सकता. इसके पास अपनी कोई एंजाइम, कोई अपनी प्रोटीन मशीनरी नहीं है. बट अब ये होस्ट सेल में आ गया. ये होस्ट सेल के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके अपने डीएनए को कन्वर्ट कर देगा, अपने डीएनए को, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, अपने जेनेटिक कोड्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू एमआरएनए.
नाउ दिस mRNA, ये हमारे पास कौन सा mRNA बन रहा है? ये हमारे पास वायरल जीनोम का mRNA बन रहा है। तो ये हमारा वायरस का mRNA है। वायरस ने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अब एक्सप्रेस कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ अ मैसेज, इन अ फॉर्म ऑफ अ कोड। और मैसेंजर आरएनए का कोड कौन सी चीज पढ़ती है? राइबोसोम्स पढ़ते हैं। वायरस के पास अपना राइबोसोम नहीं था, लेकिन होस्ट सेल में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो होस्ट सेल के पास क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो वायरस अपना mRNA राइबो होस्ट सेल के राइबोसोम्स की तरफ डायरेक्ट कर देगा। नाउ दिस mRNA would attach to the host cell's ribosomes, and these ribosomes will now produce viral proteins. तो अब जो मेरे पास ये राइबोसोम्स ट्रांसलेशन कर रहे हैं इस mRNA की, उसके नतीजे में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरल डीएनए या वायरल जीनोम ने ट्रांसक्रिप्शन करके एक वायरल एमआरएनए बनाया, और उस वायरल एमआरएनए के कोड को राइबोसोम्स ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? वायरल प्रोटीन्स में। नाउ जब वायरल प्रोटीन बन गए तो हमारे पास प्रोटीन कहाँ पर यूज हो रहे थे वायरस के? प्रोटीन्स बेसिकली प्रोटीन कोड बना रहे थे। तो बहुत सारे जब प्रोटीन कोड्स बन जाएंगे तो वायरस क्या करेगा? बहुत सारे प्रोटीन कोड्स बन गए यानी वायरस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड्स उसने बहुत सारे बना लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ सम फॉर यू। उसने फॉर एग्जाम्पल अराउंड 5 चेन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन बना ली। अब इतनी सारी एक वायरस ने 5 प्रोटीन कोड्स बना लिए एक होस्ट सेल में आके। अब वो प्रोटीन कोड्स असेंबल करेंगे, इस डीएनए के कुछ सेक्शंस होंगे, तो ये बेसिकली एक वायरस 5 वायरसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 5 वायरसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एक सेल में 5 वायरसेस कंबाइन कर गए हैं, ऑर्गेनाइज कर गए हैं, और वो इस शक्ल में, जो उसकी ओरिजिनल शक्ल में, वो इस होस्ट सेल के अंदर 5 वायरसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली होस्ट सेल में इतनी जगह ही नहीं है, तो होस्ट सेल जब बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, रेप्लिकेट हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, जब बहुत सारे वायरसेस अकोमोडेट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? होस्ट सेल बर्स्ट कर जाएगा, होस्ट सेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होस्ट सेल में अब कैपेसिटी ही नहीं बची है और वायरसेस को होल्ड करने की। उसके अंदर एक डीएनए आया था खाली, उस डीएनए से वायरस ने अपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बना ली हैं। अब उस होस्ट सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पेस बची ही नहीं है, तो वो क्या कर जाएगा? वो टूट जाएगा, उसका लिसिस हो जाएगा। And that is why we say that all viruses are what? They are parasitic in nature. वो इवेंचुअली एक वायरस जब अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, जब वो अपने बहुत सारी कॉपीज एक होस्ट सेल में बना लेता है, तो होस्ट सेल फट जाता है, टूट जाता है, उसका लिसिस हो जाता है। सो दैट इज वाई ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि कोई भी वायरस आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल एक्टिव होता ही नहीं है, रेप्लिकेट कर ही नहीं रहा होता। वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन कर रहा होता है, और जब बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन हो जाती है तो वो होस्ट सेल खुद ही खत्म हो जाता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इज एनीथिंग व्हिच इज कॉजिंग हार्म टू समवन। मुझे अगर एक मच्छर आके काट रहा है क्योंकि वो मुझसे, फॉर एग्जाम्पल एक मलेरियल मच्छर है मेरे पास और वो आकर मुझे बाइट कर रहा है, तो वो मुझे ना सिर्फ वो मेरा खून मुझसे ले रहा है, बल्कि वो मुझे मलेरियल जर्म्स, मलेरियल पैथोजन मेरे अंदर इंसर्ट कर रहा है। सो उसने मुझे हार्म कॉज की। सो दैट mosquito is a parasite to me. Similarly, this virus is entering a host cell, a normally perfectly functioning host cell, और उस होस्ट सेल में उसने इतनी रेप्लिकेशन कर दी कि वो होस्ट सेल खत्म हो गया, टूट गया, उसका लिसिस हो गया। सो ऑब्वियसली इट हैज कॉज्ड हार्म टू दैट होस्ट सेल। क्यों? क्योंकि होस्ट सेल बचा ही नहीं है उस वायरस को एंटरटेन करने के बाद। सो ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक इन नेचर, ऑल वायरसेस exist within the host cell. They overtake, they hijack the protein machinery, the um, the metabolism of a host cell, and eventually हमारा host cell का जो अंजाम होता है, जो एंड होता है, वो यही होता है कि वो होस्ट सेल खत्म हो जाता है, उसका लिसिस हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर वायरसेस which you need to know. Any questions about viruses? Anything which you want to ask? Any confusion?